got her designation on, no? Right? Hmm. Hello and welcome to this show on Budget 2026. Ever since Union Finance Minister Nirmala Sitharaman read out her 1.5 hour long speech, news channels have been scrambling to pinpoint one big ticket announcement that could make for a catchy headline. They're still scrambling for it. They're still struggling to get a big catchy headline. And in the meantime, stock markets took a sharp dip because of her announcement that the securities transaction taxes will be increased. So this is what has happened. But the government on its part has claimed that the budget focuses on long-term development goals that includes employment generation, manufacturing boost, and keeping the fiscal deficit in check. Yet, a large number of political economy experts believe that this budget could have been a window to chart out or to draw up a comprehensive plan to boost consumption, demand, and especially in a context where US-led tariffs have put the Indian economy and also the Asian economy on a big spin. So this is, and moreover, with no immediate reliefs for common people, it it seems almost certain now that the common people and poor of our country will continue to live in deep uncertainties, especially at a time when there hardly any welfare spending. Such is the situation that if you see the last year's revised estimates, you'll see a massive underspending of the budgetary allocations made last year. There are many instances of such. One of it is Jal Jeevan Mission, in which around about 67,000 crores, which were allocated in last budget, only 16,000 or 17,000 have been actually spent. So we'll discuss all these kind of things currently, and we are here to discuss uh, uh, what this budget presents to us. Is there anything for the middle class? Are the government's claim about long-term developments true, or what the political economy experts believe, that this budget has actually done nothing structural to improve India's uncertainty at the moment? And today, I'm Ajoy Ashirwad from The Wire, and I have with me MK Venu, Wire's founding editor, and Yamini Aiyar, who is the former head of Center for Policy Research and currently a senior fellow at the Brown University. Welcome, both of you. Thank you. Venu, I'll start with you. What is your broad take? So my broad take simply is that that this, sorry to sound a little facetious, when she was speaking and she was presenting a speech, I felt a terrible sense of deja vu. That was my first tweet. I felt that everything that she was saying, she had said sometime before the previous year, or the previous year, if maybe. It's been 11 years now, yes. So, lots of small things, but when you just step back and try to find a broader theme in this budget, a broader thrust, especially considering the global tailwinds and the kind of pressure that India is under today, with the worst performing currency in Asia, with foreign investors turning away, which the economic survey admitted. There are such clouds of uncertainty. I didn't see any big any big plan to counter all the global headwinds in terms of generating domestic demand, or doing something to cushion the many sectors which are suffering because of the US 50% tariffs, the labor intensive sectors. There was no elaborate description of any of those things. Nothing, yes. As if things are fine. Indian economy is growing well. They keep claiming it's got the highest growth rate, although many people doubt the real GDP growth rate also. So that's what my net conclusion was, that what is this budget about? Is it
Are they trying to stimulate demand? Are they trying to address unemployment? Are they trying to address the farmers' issues? Are they trying to address the many sectors which are reeling from the Indo-US from 50% tariffs that US has put on us, and some of the announcements that she made, like 200 legacy industrial clusters to be revived. Now, I thought that this should have been done in the 11 years that they have, Yes, yes. they have ruled or they've governed. And then that 10,000 crore equity fund for small and medium enterprises to revive small. Well, I've heard this many times before, some funding support for small and medium enterprises through SIDBI, etc. Nothing has happened. Small and medium enterprises have, through COVID, through before that demonetization, GST, they are virtually, they've been destroyed. So I don't really see anything. Even the ruling party, the treasury benches, seemed less enthusiastic when they were thumping the desk. I didn't hear in a single announcement where the thumping could be louder and excitement in their own camp. Well, Such announcement. No, Yamini, what do you feel? Old wine in new bottle? Well, you didn't hear any thumping because there was no real one big Organic announcement thumping. or Yes, anything yes. in the budget, right? And I think that in some senses is the way to make sense of it, in that global turmoil, ruptures notwithstanding, I think it's almost a very sober admission of the limits of what we can do given the limits and constraints of our economy. In the following sense, right? Since the pandemic, the budget has emphasized stimulating demand via capex, right? We know that has not kind of revived the animal spirits of the economy in a broad-based way. There has been some revival over periods of time, particularly, for instance, in the real estate sector and luxury goods sector, etc. That kind of created the K-shape of the economy. But the overriding structural challenge, how do you create a labor-intensive growth, has been a problem that, to Nirmala Sitharaman's, in all fairness, is an old structural challenge of the Indian economy that needs revival. And the response to this global turmoil can only come from that. Absent that, we are only going to be able to tinker on the margins. And that's what essentially has happened. Let me just give you two useful figures to make the argument. We are clear, and that's not necessarily a bad thing, that we have to stay firm on the path of fiscal consolidation. So this budget has maintained a fiscal deficit. It shows in its revised estimates for this FY at 4.4 and says it will achieve 4.3 by next FY. This was also the year, if you recall, of income tax cuts and rate cuts for GST. Therefore, revenue generation was somewhat tepid. To be fair, revenue generation has always been tepid as a percentage of GDP. It's been more or less static. So how have we maintained fiscal consolidation? Yes. It hasn't come from revenue. It has come from cutting expenditure. Right. So expenditure, it had peaked, of course, during COVID. And since then, there's been a steady decline. But it was approximately 14.19% of GDP for this FY in the revised estimates. And it's going to be down to 13.99% total expenditure of GDP for next year. They have also said, like they have always done, same old, capex is going to stay more or less steady at 3 point something of GDP. So the cuts have come from revenue expenditure. Revenue expenditure is where a lot of the stimulus can be provided to the economy outside of the core capex. And that's really where the changes, to the extent that there are any of the budget, are visible. So it's really, just to summarize, a sober assessment of what can be done given challenges. You don't want to upset the boat of fiscal consolidation at this point in time. So you have to maintain that path. And the only way that you're going to be able to maintain that path is to keep expenditures in check. Once you have made that call, what big ticket announcements can you offer? You don't have the resources. And also, as Yamini was saying, this government has
the problem with this regime is that they've tried everything in the last 5-6 years to stimulate the economy. They now they increased capital expenditure from roughly 5.5 lakh crore in 2022 to 11.5 crore. Now it's 12 this time. Yeah. Now, in spite of such a big increase, we have not seen any crowding in of private investment. I mean, they Keynes has been defied like nobody's business in the way our economy is functioning. Or the government is trying to so stimulus to huge capex, private sector not crowding in investments. In fact, private sector not participating in terms of upping investments meaningfully is a constant complaint of this government. In the economic survey, in fact, there's a whole chapter trying to harangue the business, the world of business, saying that why aren't you doing things that big corporations of Japan, Korea, and Germany they've done for their countries. They've really sort of taken risks and they've taken investments to such levels, and they've participated in creating national kind of brands and all. Nothing of the sort has happened. So no meaningful pickup in private investment. When you talk about the middle class, last budget they gave something to the middle class, up to 12. They changed the income tax. Tax free. Tax Up to free, 12 lakh. Those remain the same. Those are the same. But even there, the middle class has not responded in terms of really upping consumption levels, right? And they cut GST rates some months ago around Diwali. So there was some little festival season. There was little bump up in consumption of items like SUVs, more like upper end items. But now even those are tapering back. So they tried supply side tax cuts, big tax cuts in 2019. GST Bachat Utsav and all. Tax cuts. Corporate tax. They did that. Corporate tax cuts. Yeah, 20. Releasing 1,45,000 crore every year for the corporates have not responded. Corporates are sitting on them, as somebody said, 6 lakh crores of reserves and all, not investing because corporates say that we'll invest only if capacity utilization, consumer demand goes up. Unless capacity utilization reaches about 90%, they don't sort of start planning for new investment, right? So there is multiple traps that this government has got itself into, and the unemployment story, we all know what's happening. About farmers doubling their income. There's no mention of farmers in this budget. No, there is. It's some commitment to improving farmers' income was made in the speech, but the cashew nut, coconut, and those kind of cash crops will get some kind of stimulus. This is not anything dramatic, and in fact, there is no real change in overall allocations. I mean, ultimately, a budget has to be judged for what it's saying in its allocations, and it remains exactly where it was. And the other larger point, again, this Yamini was saying, see, the revenues did not grow this fiscal as anticipated, simply because it's the nominal GDP growth. It's the nominal GDP which you and I experience, right? Nominal GDP is growing at some 7.6 or thereabouts, whereas they had budgeted for over 10%. No, they're saying inflation rate is down to some 1% or whatever, 1.2. Nobody believes that. So when nominal GDP growth rate is so low, how will you get revenues? And their answer to that is cut expenditure. Like you said, many of the budget allocations they're not spending. Yes, the same thing might get repeated this year. And if you look at, I think Yamini has some figures for the social sector. Yeah, I'll come to that. Venu, but you listed a number of problems why, despite all these kind of efforts over the last 11 years to boost private investment, why is it that the government has been unsuccessful in drawing private investment, despite the fact that India is seen as a huge market, its growth story? This is like this is a $1 million question. I have read stories where Nirmala Sitharaman some 2 years ago or thereabouts, she's addressing the CII, all the big businesses in this country, and she's telling them
that you guys are like Hanuman, that does not know Hanuman does not know his true strength, so he underestimates his own strength. So therefore he doesn't reach his potential. So she was likening the Indian industry to Hanuman. So I think later I wrote a piece saying that probably if they get Ram along to advise Hanuman, so something might change. So they have to find Yes. Lord Rama from somewhere, get him to sort of advise the Indian industry to start investing, perhaps. Yeah. So, Yamini, you pointed out that most of the cuts may have happened from the revenue expenditure side. What could be its impact, like generally overall impact of such cuts in expenditure, especially like as we're talking about, I had this figure about the Jeevan mission, Yeah. and even those last 11 years, like Skill India, Smart Cities, Startup, even these kind of have failed to take off. It remain those big announcements by Prime Minister Modi, they still remain a non-starter. In fact, we've done many stories where budgetary allocations were very little, and even though that little expenditure were not spent properly. So Yeah, not only that, yeah, they're all mired in corruption charges, which yeah, CAG is yeah. kind of indicting them on many of those Yeah. schemes. So it's a good time, I think, after 11 years to kind of look back and see what these kind of programs or like kind of big announcements which did a great job for the PR industry of India, but actually did not entail any kind of material benefits to people. So what is your kind of broad understanding about these? So look, I think one thing that we should remember that is shifted quite a lot, especially in the last 4 or 5 years, is that the bulk of the welfare thrust has moved away from centrally sponsored schemes and investments in public infrastructure as such towards cash transfers. And over the last couple of years, particularly, that shift has moved away from Government of India. So we had big announcements, 2019 PM Kisan, in the 2020-22 phase. There was a lot more focus on the PDS, etc. That has now been pushed largely to states. So all the new schemes actually are coming prior to elections as states announce. And to be fair, this has become a cross-party thing. Everybody is competing in this cash war. And so political prioritization has changed quite dramatically, which inevitably is going to affect the extent to which the administrative system is going to be able to focus and on. focus towards elections. Exactly. I mean, to be Whenever there's honest, election, cash transfer. to be honest, that has always been the case, but now it's become even more. I mean, it's gone to a different, the bar has completely shifted now, and technology has allowed this to happen. And I think that's where the second issue comes. Look, we have always had traditionally weak state capacity and weak administrative willingness and political willingness to do various things. In the kind of maximum governance, minimum government type of framing of what the BJP and Modi had kind of presented for 10 years ago, the attempt was to, the assumption I think was that all this technology will allow us to bypass these very hard constraints of actually building state capacity to get things done. And as it turns out that you can build your jam infrastructure, it will get you so far with limitations, as the CAG has rightly pointed out, even in the DBT, but to some extent, we see it in some of our surveys also, that, there has been a scale up movement of money in that sense. But ultimately, the core problems of administration, it requires strong panchayats. It requires greater transparency at the citizen level so that there's a broader interface and citizens have the power to ask and demand. It requires a system that has the relevant administrative infrastructure that is built into it, that includes human resource capacity. None of those have been priorities. So why are we particularly surprised that these things have not actually got implemented? To do Swachh Bharat back in the day,
there was a lot of focus on Swachh Bharat. Ultimately, it became a toilet building program. Even that required a lot of money and input, which was given to actually go through that whole process. But the maintenance and ensuring that the gains of that have continued to do the next level of Swachh Bharat urban and overall sanitation and waste management. Jal Jeevan is not about laying a pipeline, but ensuring that water flows through that pipeline. These are fairly complex administrative tasks for which careful administrative prioritization and emphasis need to be put in place. And frankly, that was not on the agenda because perhaps the political calculation was that ultimately the cash transfers are the key kind of means by which the Modi can present himself as the Vikas Purush and the governance Purush, which got him gains to some degree. And then ultimately, when the economy itself, it comes full back circle to where we started this conversation. If the economy itself is not generating enough revenue for you to be able to invest across a range, you're going to have to do expenditure cuts because you don't have enough revenue for the economy. And in that constrained fiscal space, Government of India is going to cut in these sectors as it always has. So that's really what happened. Venu, we switch on to while we're talking about the social sector expenditure, there was an understanding in India that a developing nation like India and with a growth story like India, we need to heavily invest in health and education. Over the last 11 years, we have seen very little of very cosmetic changes in these kind of budgetary allocations. So, and these are the mainstay of any form of long-term employment generation, both good health and good education. This time we have had an announcement of content creator labs. While the education budget remains the same, the uptick in the education budget is probably because of this content creator labs in schools, which are actually decaying. The school infrastructure in India is crumbling right now. So is higher education. And so is higher education. So is the government's health infrastructure also. So what do you have to comment on that about? I think Yamini will give you more details on health and education because but this employment generation aspect. But I'll make a larger point, which is something as Jean Drey's said about 5-7 years ago, that Modi government's mindset. He wrote a piece which stayed with me. Said, is always physical infrastructure. It's a Gujarat thing. They want to see sites of steel cement sites of development. Which will include also Sardar Patel statue, but bridges, ports. That's why the emphasis on capital expenditure and constantly hopping on roads. There's 6-lane highways. It's fine, all fine. But these days, the question to ask is, even roads and all have become so mechanized construction. Are they generating enough employment? And Dre's point was that there's a decided bias in favor of physical infrastructure as against social infrastructure. That has been visible in the last 10-11 years in terms of even outcomes. I think health sector outcomes, health services, or even higher education. I mean, you open a newspaper, Yamini, what do you read about higher education these days? It's a mess everywhere, right? Totally. And they on paper they've created many more IITs, many more AIMS, and what do we see? They've created some physical infrastructure there, but are there enough personnel there? Whether teachers, filling of posts, health services posts, public health services. There's no. I mean, it's abysmal, abysmal, yes. And all these things got exposed after COVID. I read a piece somewhere, I think in India Today, where they said that Ayushman Bharat, after COVID, the utilization of Ayushman Bharat was abysmal in North India. In South, it was not better because South was already equipped. South was already doing a lot of insurance-based health, delivery. So that is the state of affairs. And with this government, nobody's. They are so adept at building narratives
then they'll say that they've done 60 things, and it becomes very difficult to track all those 60 things. So if you talk about 10, they'll say, no, we've done 10 more things. So don't talk about those 10. And we all know, what has happened to smart cities, right? Yes. In this budget, they talk about tier 2, tier 3. What has happened to tier 1? No, What's the happening to existing smart projects are what's in happening to abysmal the state of Delhi? Yeah. The pollution, livability in tier 1 cities. Now they moved on to tier 2 and tier 3. Tier 3. Yeah. So Yamini, I assume like the idea that the government is probably trying to project is that we are trying to skill people. So skill people, as opposed to a few years back, I don't remember, I think Amitabh Kant wrote a piece where that this government doesn't believe in creating social sector expenditure like public health or public education, but to give deliverables. So which deliverables mean like you give them toilets, you give them gas cylinders, you give them PM Kisan, or what we mean by DBTs now. So the strategy is clearly not working given the uncertainties people are living in. There's so much of job losses. Capacity building has not happened. And so is it backfiring, or is it, how do you make sense of it? Look, I think the broad limitation has been a refusal to invest, as Venu pointed out, in human capital, and an assumption that investments in physical capital would yield old trickle down school of economics, will yield benefits that will push the economy into a virtuous cycle. And that's where it's been. It is interesting, if you look in terms of pure allocations, we have not seen any dramatic changes. In fact, we have seen primarily stagnancy in allocations to education, to health, even to skilling, across the board, and that's been an old trend that has continued in. So no real terms. None whatsoever. In the last 6, 7 years, none whatsoever. In fact, a marginal decline. And that marginal decline has occurred on account of the fact that the model for welfare that had been followed for the first term and the second term was a bit skewed because of COVID, was largely on this, what you say Amitabh Kant had said, but what Arvind Subramaniam, for example, categorizes as new welfareism. In my work, I call it techno-patrimonialism, this giving of cash and in-kind benefits via technology as a means of kind of establishing a patrimonial relationship between voter and government. And that necessarily means that you're not going to be investing in some of these other things which are core to the public infrastructure, core public goods like education and health, right? So we've seen that. There have been sparks occasionally. Ayushman Bharat, investment in insurance. Now we can quibble about whether that's the core goal. But for a moment, without getting into a detailed discussion on what should be prioritized in health, there was some prioritization of an idea in health via saying through Ayushman Bharat we will emphasize insurance as a means of enabling tertiary care to the poorest. The building out of health and wellness centers, which I must say without too much investment in terms of budgetary allocations, but overall study seems to show that they are actually working well in different parts of the country. The new education policies, emphasis on foundational literacy numeracy through Nipun Bharat has yielded some positive shifts, even in the way in which budgets are being prioritized, in that the prioritization of Samagra Shiksha for primary schooling is now much more on quality-related inputs than mere infrastructure-related inputs. But those are all incremental. It hasn't collectively amounted to a massive shift. And coming back to budget of today, as Venu has said, we've heard old wine in new bottle about this employment issue now consistently for a while, and certainly after the 24 election, it has been visible. And some new interesting announcements have been made, right? Care economy has kind of found center space.
this employment, education, employment, skills, standing committee, although I'm not sure whether the budget is a place to announce a parliamentary standing committee, but chalo, theek hai, nonetheless. All of this is fine and dandy in and of itself, but it doesn't address the fundamental issue of, are you actually investing such that you can build the necessary skills for this overall transition? Now, maybe one dramatic thing that could have been done in the wish list of the coulds, because now it's all done and dusted, is given the constraints under which we were operating, and now the government has been willing to stick its neck out and say, even we should talk about the Narega budget, but even the old flagship programs of MGNREGA and now GRAMG, some increase in allocation, but really it's no longer taking that role core. So could it have then done something really dramatic, which was to reorganize its revenue expenditure such that it emphasized this, it emphasized skills, education, higher education, school education with more financial allocation, sending a signal to states, much of this is state subjects, that they too must kind of respond effectively. But, that's very forward thinking, that a sober status quo is, this is what we can do within our constraints type of budgetary thinking is not going to achieve. And one thing, I just want to the point that Yamini made, but the tendency of this government not to do anything structural long term and to just take the easy way out, cash transfer, before election. Just but this budget did not have any of those also. No. It cannot be called an election budget. But that has stopped. I'll tell you why. They don't do that in the budget. Now what they do is, what they did in Bihar. See, both BJP government, both places, they'll tell the state government to do all the 10,000 rupees, the push has gone on states. The push has gone on states. Yes. See, and then they claim that states are being irresponsible, whereas what is happening is BJP government is there in most of the states. When elections happen, BJP at the center encourages the states to do all these things, and then the understanding is that later on it will be backstop. Some financing will be obviously. Bihar has spent 40,000 crore. They announced this before the elections, and that is more than their capital budget, capital expenditure budget. By the way, I was PRS legislative. I saw a piece of data. The revised estimates for Bihar before the election for the previous year was 9%. Fiscal deficit was 9% of GDP, whereas the budgeted was 3%. So I asked somebody in PRS. They said, no, it's a lot of expenditure, unforeseen expenditure came, but they said they'll adjust it later. Now, this is what is happening. These people have their governments in states, and they have some understanding that you can exceed the fiscal whatever limits, and later on we'll take care of it. Let's see how they take care of it in Bihar. So, but more importantly, I must tell you, there's a book which former finance secretary Subhash Garg wrote. It's called, I think, We Also Make Policy. In that book, he says that he was part of the team which was urgently invited by PMO Modi to give farmers, minimum support price for all the 23 items of agriculture. At the moment, only a few items are covered under MSP. So Modi called a meeting and said, I want to cover all 23 items. So tell me what it will take. So they all sat together. This is all in the book. And they prepared this thing, blueprint. This is what. The next meeting he called and he says, this, it seems this won't be possible. Have previous governments done this? They said, no. Nobody has given minimum support price for all 23 items. So then the PMO goes, okay, let's cancel this. This was just before 2019, 6 months before the elections. So let's go for PM Kisan then. So that's the change of attitude. First, you first have series of meetings on how to structurally change life for the farmers. Give MSP on, somehow create an MSP thing for all 23 items of what they produce. And then you say, okay, this won't be possible. It's too complex. So easy way out. PM Kisan. PM Kisan is also a political cash cow. It's a cash cow, right? Yeah. So
I gave you this example to show how in their internal workings also, the bias is all towards, as Yamini said, paisa fek do. Just use jam. Now this jam has become a, it's boomeranging in terms of the temptation and the tendency. Yeah. So, Yamini, I was looking at the data. That social sector, there are around 20 social sector schemes. And last year's revised estimates show that 17 of the 20 social sector schemes underspent last year. So that brings me to a question that do budgetary allocations even matter now? Why is so much of underspending, and to the extent, as we have again, I would like to quote the Jal Jeevan thing, which is like a deficit of nearly 80%. Yeah. No, look, this problem of underspending is an old one. And in fact, some of my original work back in the day evolved precisely from this from this observation that during budget time we talk about BEs and allocations, but the real story is in the revised estimates that are consistently driven down across various schemes, and there's huge bottlenecks of implementation that go all the way down the system. And this is a recognized problem even in the bureaucracy. And over decades, lots of debate has happened on what needs to be done to fix it. This dependency on technology is a big part of the story also. And even we push this idea, these just-in-time transfers of money in ways that could ensure that some of the administrative labyrinths that create all these bottlenecks in spending could be resolved. But in order to do that, for all of this to work, you actually have to have a much more concerted effort at building state capacity and strengthening the structure of the state at the grassroots level. What we have done over the last decade actually is kind of the opposite. And here again, technology has been used to centralize a lot of things, which have weakened the capacity, already broken system. It's become a lot harder. And because we don't have good data and we are not in a, the political environment doesn't generate conversation. One part of the data issue, of course, is around, big census, etc., that we don't know what's actually happening in the real economy. But also in administrative data, there used to be space through, for this kind of discourse. But that's become very hard. So all these technology tweaks for just-in-time, etc., how are they working? To what extent is this aiding and facilitating? And to what extent is there a dialogue that can be generated between states and center? Now the politicization has become even more, right? Think about West Bengal, Tamil Nadu complaining about not receiving Samagra Shiksha, NREGM, etc. So, all of this. So it's this perfect storm of an old administrative problem to which some new tinkering solutions have been developed. But we don't have the culture now in which we can actually debate, dialogue, and figure out what's right, overlaid by political centralization such that, monies are being, all governments, even prior to the NDA or BJP, have used discretionary funding of centrally sponsored schemes to align to politics. That's not a new phenomenon. But here, everything is on steroids, and it's being done overtly against opposition parties, like the Samagra Shiksha in Tamil Nadu being a good example, all of which are delaying things. Don't forget, fundamentally in our federal structure, monies for schemes can only be implemented via cooperative federalism. That is, some monies may come from centrally sponsored schemes through central directive, but ultimately it is the state implementation architecture that needs to work towards getting these things implemented. If you create an administrative culture of such deep centralization, these problems are going to occur. And of course, like in Jal Jeevan, etc., when the overarching story of the economy is one of constraint and shrinking fiscal space for the center, you will see budget cuts. These budget cuts further disincentivize the possibilities of actually implementing. One last point I want to make, because I don't think we discuss it enough, is that from 2015, with the dismantling of the Planning Commission. Now, I'm no great battle carrier for the old Planning Commission. It had deeply centralizing tendencies. But one of the things it certainly did do was to create some predictability through the plan process
of overarching allocations within centrally sponsored schemes and particular key sectoral areas of the economy that gave some predictability to states too. And then the tinkering was done between all of that. Now, absent the planning commission, these are discretionary allocations in the hands of a finance ministry. Finance ministry by design is incentivized to cut expenditure, not to give expenditure. That is its fundamental function. So when line ministries are going to finance commission with their demand for grants, the finance commission's instinct is to say, where can I cut? Because I have to keep within my fiscal consolidation story. That whole the dialogue and debate around developmental expenditure, which brings states in, used to be done through the plan process with all its imperfections. It had this one value. We need to ask, have we thrown the baby out of the bathwater? Not going back to the old planning commission, good God, no, we don't need the status quo, but to be able to build off and recognize the limitations of what happened when you threw the baby out of the bathwater. No. You're making a very important point, Yamini. I want to bring you in here, Venu. This over-centralization. We, as a political correspondent, have been writing about how this kind of centralization has had its political fallouts, as we saw over the last few years, how states have been kind of jumping at everything against the center, from the devolution of taxes or any other thing. Do you think that in a long-term story of India, this is not going to do any good, this kind of hyper-centralization, not just in our federal structure, but also in this kind of financial planning? Here again, Ajoy, it's an attitude. You know what they've done to the Jiramji, the replacement of Manrega. What is it? You know, after all, the last few years, what about 90,000 crore? Essentially, to put it bluntly, what has Modi government done? It has said, okay, this won't be now decided at the level of panchayats. It won't come from below demand. We will decide. It's not a right anymore, and it's not demand driven. We'll decide how to spend this and how. Basically, they want to use this. My take. They want to use this corpus also around election time. Just throw. Basically, it'll be the votes that they will get in state elections or in other elections. This money will be used to maximize the votes that they gather in various elections. And the other thing, again, the attitude. Again, I go back to Finance Secretary Subhash Garg's the latest book, the one that came out some 8 months ago. No Minister, it's called. You know, where he says that a note comes from Nipendra Mishra, PMO, to them. I mean, shockingly, the note says that although the Finance Commission transfers are the right of all states, you transfer 41%, they'll use it the way they want to. But even on this, we want to see how we can guide them to spend it on the lines that the center wants. He says, please find ways to ensure that the center, even on Finance Commission transfer, that they adhere to broad central, objectives. So obviously in the book he cites that. In fact, he talks about that note, and Subhash Garg says that they were all the bureaucrats there, in the ministry. They said, "What the hell is going on?" They don't even want to give states full independence to use the, their legitimate, transfer, the tax share. Yes. So this is a mindset. Yeah. And this mindset has been kind of playing out in different ways. No, they had stopped even when MGNREG was there, stopped all the West Bengal's funds, and it was a huge issue back then. No, but like we come to the last segment. Like, what's this budget, today's budget, has in store for people like us, middle classes? Like last time we had income tax change, and there was some sort of celebration, although a large number of middle class could not, eventually take any benefit out of what was announced. Yeah, the tax-paying population is a very small. I mean, 1 lakh crore odd, Yeah. So those many taxpayers. How many taxpayers we have? Probably 18
maybe to 2 crores or something. Actual taxpayers. Maybe there are 9 crore Yes. returns filers, but only 2 crore. That was hardly a stimulus. In fact, even the industry at that time said that a GST cut would have been a far better way of stimulating demand, because GST is a regressive tax. No? A rickshawala pays the same GST as a businessman. Indirect. But the government did something. They it cut did, GST. rationalized They rationalized GST. They GST. rationalized that was Later, not in the budget, but later. What was the motivation for that? Then. They were under pressure from this 50% tariff. Trump. They said we have to do some internal reform. It was all driven by the sankat aaya jab sar pe. Overall macroeconomic factors. Then they said, okay, we are doing reforms. Reform. You, Yamini, what do you think? What's Look, there is nothing, and let's go back to why there is nothing. There is nothing because there is a deep structural underlying demand constraint in the Indian economy. Venu posed the question. CapEx bhi kar liya, rate rationalization bhi kar liya. We've set up a deregulation committee, which is what everybody the kind of elite conversation. Corporates ko tax break bhi de diya. The elite conversation on what will push the economy, right? Deregulate to stimulate and so on. Ultimately, the hard truth is that the animal spirits of the economy and this visible or the lack of the animal spirits visible in the lagging private investment is largely a consequence of an economy that is not delivering to it's not seeing rising demand. And to address that, we have to address the fact that we have an economy that is not providing labor-intensive growth and wages broadly, except for the top tip of the K-shaped economy, that are not growing. So effectively, this is what you are going to get. Now, these are deep structural issues. They are not issues that perhaps can be addressed in a singular budget. But the assumption that we can kind of paper past all of this with these nice move towards a little bit of that. So we've got some nice announcements that we recognize: care economy, employment, services sector, employment, focus on tier 2, tier 3 cities for infrastructure. We know one of the constraints of MSME, for instance, is the low quality of infrastructure in tier 2, tier 3 cities with some minor amounts of allocation, but it isn't a broad roadmap. And because that has been the constraint consistently, and ultimately the fact of the matter is that all that we can do against the backdrop of all this global headwind, given the constraints we have now chosen to live with, is to just steer a careful course. We are steering a careful course, most visible in our fiscal consolidation through expenditure cuts. And we have a situation where, like, for last 2-3 years, the share of government revenue from income tax is once again higher than 21%, than those coming from the corporations, which is at 18%. So is it safe to say that tax-paying individuals are bearing the brunt of contributing more to the country's economy? See, Ajay, again, I come back to the number of taxpayers. 2.5 crore, 2.5 crore, they don't drive the economy. The number of filers, 9 crore. Actual taxpayers, 2.5 crore. All others they report zero tax. The real story is that supplementing this K-shaped growth that Yamini said, the periodic labor force survey some years ago clearly said that bottom 70% of the wages are stagnant. ये तो सब admit करते हैं. Government also knows. If bottom 70-75% is stagnating, and if the bottom, that K का जो नीचे वाला डंडा इतना लंबा है, तो economy will never recover. And this is reflected in other ways. The household savings, RBI data, household savings are a multi-decade low. Household savings are at a multi-decade, low. I think 30 or 40 year low. RBI has said, the savings are going down. People are borrowing to consume. Their retail loans, you can say loans against gold, all kinds of retail loans are. So there is distress.
among the lower middle Lower classes. middle Yeah, classes. So, like, I mean, that problem yeah, is it's not will going. it'll haunt us for the next many years. Yeah. No, Yamini, you're talking about creating labor intensive industries. This budget doesn't have anything that kind of you probably all the it more of optics about AI, R&D, rare Oh, earth absolutely. magnets, Yeah, and yeah. all No, of no. those. These are not labor It, intensive. it Yeah. is So, the yeah, bits. So the labor intensive bits are things like care economy, yeah. this textiles. Yeah, they There's some focus spoke on about some textiles. textile and Gently, fabrics at a Yes. time when leather, most of the footwear. Coimbatore textile industry is are on the verge of shutting down right now because of the US-led tariffs. Sure, no, So, but all I'm yeah, saying, yeah. and, So, but and some of the there's longer term no things like tier focus two, on tier three, yeah, hmm, but it's there are these, it's all there in some smattering. It's mattering. not Yeah, a it's not a concerted, focused. focused Yeah, effort, absolutely. absolutely. And Yeah. ultimately, even the claim that, we want to move the employability through services requires a huge investment in skilling, higher education. Higher education budget has not moved. It's at 55,000 crores. It Yes, stayed yes, right yeah. there. It's it So right there. I forget the software issues about the quality Hmm. of higher education. Even the what a budget can do, which is allocate, the allocations have remained Rare earth stagnant. So magnets, nothing. nothing. It's just like it feels like very pompous or vacuous. One of those. It's So just yeah, to reiterate where I began. yeah, It is yeah. just a sober. I mean, in some ways, it's the most credible thing about this budget is its admission that there's nothing I can do. Yeah. This is what I have, and I'm operating within this constraint. I am not going to try anything dramatic to expand. And I'm hoping that because what I have has allowed me to chug along thus far, I shall continue to chug this way. Yeah, so no, that's like quite a, very good summing up of what you were trying to say. I'll get the last word from you, Venu. Well, pretty much along the lines that basically it's a holding operation, this budget. And I now feel that really things have to be done outside the budget. And budget is what I'm not even sure, Yamini. I'm not even sure whether this budget, some of the numbers that they have assumed will hold, because No, I because read Jairam GDP, Ramesh's tweet Yeah. that they're changing the GDP base, CPI. yeah, They're yeah. reducing the food weightage in the CPI basket. House rentals going up. How will inflation play out? What is the assumption for CPI? What is the assumption for rupee? I hear all kinds of discussion within the government. Some say that rupee should be allowed to depreciate, find its natural level, which could be 95, 9700. So, and assumption of rupee, assumption for this thing, assumption for GDP. They are changing GDP methodology also. So I don't know whether as we go along, how the all the fiscal math math assumptions will will, change. will hold up. They are Yeah, assuming a nominal GDP growth of 10%. Yes. yeah. Now I don't know, 10%. They claim 6 to 6.5% will be the real GDP. Are they saying that then inflation will be about 4%? Is it because CPI is being changed? They expect that inflation will go up. Yeah. I don't know. Yeah. Okay, so we'll end it at that. So, and we have actually had a lot of very sharp political reactions also, one of which DMK's Tamil Nadu poll-bound state, the Kanimuri said that even an election in Tamil Nadu could not draw center's attention to Tamil Nadu. And I really like Mamta Banerjee's comments, who said that this is a Humpty Dumpty budget. So we'll end it at that, on that note. And our audience who have logged in, please do stay. We'll have another Hindi show by Arfa Khanum Sherwani, who will also be discussing the budget. So keep be online and wait for another 5 minutes to listen to Arfa and her panelists. Thank you. Thank you. Thank you.
मेरा वो इंटरनेट वगैरह चेक कर लीजिए, मुझे एक फुल फ्रेम भी दिखा दीजिए आप लोग। Can I talk to you guys? नमस्कार, स्वागत है आपका इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। आप देख रहे हैं द वायर। ये भी कोई बजट है सरकार? जी हाँ सरकार, ये कैसा बजट आप लेकर आए हैं? आप द वायर देख रहे हैं। वायर का लाइव ब्रॉडकास्ट बेहद अहम दिन, खासकर टीवी की दुनिया में ये बहुत अहम दिन होता है। लेकिन आज टीवी वाले यानी टीवी के न्यूज, टीवी के रिपोर्टर्स, टीवी के कमेंटेटर्स, वो तमाम लोग जो अभ्यस्त होते हैं, जिनको तोते की तरह पढ़ाया जाता है, और कुछ लोगों को तो आज के दिन ही सिर्फ उनको आज के दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बजट के दिन सरकार का बचाव करना है। वो लोग भी ये बचाव नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इस बजट की 5 महत्वपूर्ण चीजें अगर बताना चाहें तो क्या बताएं। और मैं सबसे पहले, एक जो लिटमस टेस्ट होता है किसी भी सरकारी नीति का, मेरी नजर में वो होता है जब बीजेपी के आईटी सेल के लोग
ताबड़तोड़ हमला करते हैं कि देखिए मोदी जी फिर से एक बार जीत गए हैं, फिर से हमें विश्व गुरु बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में साफ तौर पे ये कहा कि ये विकसित भारत का बजट है, 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2026 और 27 में क्या होगा ये नहीं बता पा रहे हैं। तो वही है कि दूर के सपने दिखाने के लिए पास की हकीकत से हमें दूर ले जाया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ बेहतरीन एक पैनल भी जोड़ रहा है मेहमानों का। आप द वायर पर बने रहिए, टिके रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। सिर्फ ये मत समझिए कि बजट जो है वो वित्त मंत्री के लिए है या वित्त मामलों के जानकारों के लिए है या इस सरकार के लिए है। जो बजट है वो आम जनता के लिए है। यूनियन बजट, इसे हम आम बजट कहते हैं, जो हिंदी भाषा है उसमें, यानी आम जनता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तमाम अलग अलग तरह की जो सरकारी स्कीमें हैं, यानी जितना गरीब भारतीय उतना ही ज्यादा इस बजट का, और बजट में कितना पैसा किस स्कीम को मिल रहा है उसके हिसाब से आपके ऊपर सीधा इसका असर पड़ेगा। अक्सर आप टीवी पे देखते हैं कि आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि जो मिडिल क्लास है उसकी थाली पर क्या असर पड़ रहा है, मिडिल क्लास के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मिडिल क्लास की तो हम बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं करेंगे। हम भारत के गरीब तबके की बात करेंगे, हम भारत के अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, भारत के किसानों की हम बात करेंगे, भारत के उस युवा की हम बात करेंगे जिसे पूरे तरीके से हाशिए पर फेंक दिया गया है। तो आप ये देखिए कि ये बजट इस कदर, इसका मैं कहूंगी जो प्रतिक्रिया के तौर पे हमने देखा कि बाजार भी, सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, और बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपए, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए एक एक मैं कहूंगी चुटकी में हवा हो गए पूरे तरीके से। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही थी कि क्या इस बजट से ये उम्मीद करें कि जो डिमांड है, यानी मांग है आम लोगों के बीच, वो बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी बेहतर होगी। बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ समझाने की आपको कोशिश होगी। दूसरी बात, किसानों के मद्देनजर हम सोच रहे थे कि क्या किसान, कई हम देख रहे हैं अभी लॉन्ग मार्च हुआ किसानों का, लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर उतर आए, क्या उनके लिए कोई अनाउंसमेंट होगा, कोई घोषणा होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वो बेरोजगार युवा जो फिर नरेंद्र मोदी से हर बार उम्मीद करता है, बीजेपी से उम्मीद करता है और लगातार उनको जिता रहा है, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, लेकिन देखिए उसके भी इस बार भी उसको बेरंग लौटना पड़ा है, खाली हाथ उसको लौटना पड़ा है। तीन महत्वपूर्ण चीजें। और इसके अलावा अगर बिग पिक्चर, टीवी का फिर वही एक फेवरेट फ्रेज होता है बिग पिक्चर, एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश करें, तो हम तीन महत्वपूर्ण चीजों को देखना चाहेंगे। एक तो क्या इस बजट में जिस तरह से भारत के रुपए का मैं कहूंगी बेड़ा गर्क हो रहा है, जिस कदर वो डूब रहा है रुपया, उर्दू में बेड़ा गर्क जब कहते हैं तो उर्दू में गर्क का मतलब होता है डूब जाना। रुपया आप ये देखिए, पाउंड के मुकाबले, यूरो के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले, अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप देखें आज भारत के रुपए की कीमत इस कदर गिर गई है। उसके हिसाब से क्या बजट में हमें ऐसा कुछ देखने को मिला जिससे इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, जो विदेशी लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां जो नहीं कर रही हैं, भारत में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, क्या उनको वापस आकर्षित करने के लिए क्या कोई ऐसी तरकीब है जो इस बजट में दिखाई दी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो घरेलू कंपनियां हैं वो भी, क्या जो भारतीय कंपनियां हैं जो भारत में अब निवेश नहीं कर रही हैं, बाहर अपना पैसा लगा रही हैं, क्या हम ये मान के चलें कि इस बजट में इसको करेक्ट करने की, इसमें सुधार की कोई उम्मीद, कोई आशा हम इसमें लगाएं, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, ये भी आपको एक ही पल में सुनवाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ एम के वेणु जुड़ गए हैं। एम के वेणु न सिर्फ के द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं, बल्कि देश के जाने माने और बहुत ही सम्माननीय आर्थिक पत्रकारों में, जो फाइनेंस और जो इकोनॉमी जानते हैं, उन पत्रकारों में एम के वेणु की गिनती होती है। वेणु, आपको तो मैं इस तरह बुला लेती हूँ बिल्कुल जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। वायर के वायर के दर्शकों को कम अंदाजा होता है कि कितनी बड़ी फिगर है, आपको कितना वेल रिगार्डेड, आपका कितना सम्मान है उस दुनिया में जहाँ के फैक्ट्स की बहुत कमी पाई जाती है, और जहाँ के हर चीज पर एक जो है मैं कहूंगी मरहम पट्टी लगाकर, मरहम पट्टी भी नहीं लगा पा रहा है आज की तारीख में तो टीवी। अब मुझे बताइए कि मैंने तो कुछ ब्यौरा दिया है छोटा मोटा जो मैं समझती हूँ आर्थिक मामलों के बारे में। मैं इस कार्यक्रम में फोकस करना चाहती हूँ कि इस बजट का जो राजनीतिक संदेश है वो क्या है। देखिए, बिना पॉलिटिक्स के तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब तेल होगा तभी तो राधा नाचेगी। तो मुझे ये बताइए आप कि इसका जो राजनीतिक संदेश है इस बजट का वो क्या है। पहली बात तो अरफा जी, दाल बराबर होना भी
अच्छी बात है कि दाल भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं पिछले कई सालों से। तो जहां तक इस बजट का सवाल है, अरफा जी, मैं निर्मला जी का स्पीच में सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे लगा कि कुछ कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई नई बात हो रही है या कोई बहुत बड़ा कोई अनाउंसमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए पिछले से बजट में कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा उत्साहित किया गया था, क्योंकि वो महीने में 1 लाख आय जिनकी है 1 लाख तक बिल्कुल इनकम टैक्स हट गया था, जीरो टैक्स। तो उससे थोड़ा सा मिडिल क्लास में थोड़ा सा जोश आया था। हालांकि उससे कोई इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कोई बहुत डिमांड नहीं बढ़ा और कोई बहुत, मगर इस बजट में कुछ दिखाई नहीं दिया। और मैं देख रहा था कि जो ट्रेजरी बेंचेस थे, जो रूलिंग पार्टी के ही लोग थे, वो बहुत ही मतलब एक मरे हुए तरीके से डेस्क को थपथपा रहे थे। तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं था जिसमें मोदी जी थपथपाते थे, वो साथ में वो क्यू लेके वो लोग भी थपथपाते थे, पूरे जो रूलिंग पार्टी के। कोई बहुत बहुत उत्साहित कोई उत्साह के साथ जो टेबल थंपिंग होती है, जो हमने और बजट में देखा, वो इस बार बिल्कुल नहीं देखा गया। और ऐसा भी लगा कि कुछ जो जो वैश्विक जो संकट जो भारत आज की तारीख में जो फेस कर रहा है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने जो बोला कि विदेशी निवेश, इकोनॉमिक सर्वे ने साफ कहा पहली बारी कि विदेशी निवेशक भारत से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, जो पर कल ही निकला था, कि इसको स्टडी करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी तक सरकार ने स्टडी नहीं किया है। और दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि रुपया क्यों लुढ़क रहा है और भारत का रुपया क्यों और जो एशियाई करेंसी और बड़े जो अर्थव्यवस्था है उनकी करेंसी से सबसे खराब परफॉर्मेंस है। तो ये सब चिंताओं का मुझे कोई विश्लेषण बजट में नहीं दिखा। कोई मतलब किसानों के प्रति कोई बहुत बड़ा कुछ, किसानों की आय दुगनी जो इनका बड़ा स्लोगन हुआ करता, तो वो तो अब उसका तो अब मेंशन ही नहीं होता बजट में। तो ये, और निर्मला सीतारमन के स्पीच, उनके जो भाषण में भी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि भाई 200 जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं पूरे देश में, लेगेसी क्लस्टर्स, लेगेसी मतलब पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो चले आ रहे हैं बहुत पहले से, उनको रिवाइव किया जाएगा। तो ये सुन के मुझे बड़ा अचंभा लगा। मैंने कहा आप जो 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव करने की आप बात 11 साल बात कर रहे हैं, ये तो आपको 2014 में बोलना चाहिए था और अभी तक हो चुका होना चाहिए था। नहीं, फिर तो ऐसा कहने लगता लगे है कि मैं कि कहती हूँ कि छोटे, मानसिक रूप से, ज़हनी तौर हाँ? पे ये सरकार 2014 में ही बिल्कुल रह रही है, जब मुझे नरेंद्र ऐसा मोदी। लगा, यही मैं कह रहा हूं, हाँ, मुझे लगा कि 2014 का बजट है ये। जी हाँ, घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी न सिर्फ कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बल्कि एक, मैंने कहा, अर्थशास्त्र की दुनिया में एक जाना माना नाम है। कई विदेशी डिग्रियां लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। घनश्याम जी, आपके जैसे लोगों पर हम बेस करते हैं कि आप जरूर हमें पॉलिटिक्स तो बताएंगे इस बजट की क्या है, लेकिन जब आप एक नजर में देखते हैं, वेणु कह रहे हैं, मैंने कहा कि भाई वेणु हमारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है, वो कह रहे हैं मुर्गी भूल जाइए, अभी तो दाल नहीं मिल रही है। इस बजट के बाद तो लगता है कि दाल रोटी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार आरफा आपको, वेनु को और द वायर के दर्शकों को। जो मुख्य बात है, देखिए हमारे देश में लगभग 225 करोड़ बच्चों का जन्म हर साल होता है। जो असर का सर्वे कहता है, जो एनरोलमेंट का डेटा कहता है, उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा, तो एनरोलमेंट डेटा के हिसाब से देखिएगा, अगर 25-30% भी आप मानिएगा, तो 2 करोड़ जो हर साल बच्चों का जन्म होता है, इसमें से 50 लाख से 60 लाख बच्चे कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं। यानी कम से कम जो कॉलेज से निकल रहे हैं, जो 1.5 करोड़ नहीं ज्वाइन किए वो तो अलग बात है, कॉलेज से निकल रहे, कम से कम उनके पास रोजगार होना चाहिए। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एंट्री लेवल जॉब्स जाएंगी। भारत सर्विस सेक्टर की बात करता है। सर्विस सेक्टर में एंट्री लेवल जॉब्स किस तरह की होती हैं? कॉल सेंटर की जॉब होती है या क्लरिकल जॉब्स होती हैं। ये तो एआई तुरंत खत्म कर दे रहा है। तो जहां पर इतना बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, जो सबसे बड़ा वर्कफोर्स है वो तबाह हो रहा है, उसमें बजट ऐसा आया जैसे लगा कि सोते सोते पढ़ा गया और सोते सोते सुना गया। ये एक तानाशाह सरकार का ऑटो पायलट बजट है।
ऐसा लग रहा है कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत कर रही है मुट्ठी भर शेयर होल्डर्स के लिए, और वो भूल गई है कि मुख्य शेयर होल्डर कौन है। और अगर आप इसका राजनीतिक संदेश देखिएगा तो राजनीतिक संदेश ये है कि मोदी जी अब ये मानते हैं कि बजट का ऑडियंस अलग है और चुनाव का ऑडियंस अलग है। चुनाव का ऑडियंस हिंदू मुस्लिम, हर रोज धर्म की बातें करना, तरह तरह के जुमले पढ़ना, तरह तरह की पोशाक पढ़ना, हर तरह से देश को बांटना, सीबीआई ईडी को भेज देना, विपक्षियों को हमेशा दोष देना, इस तरह की बातचीत, और एक मीडिया जो लगातार उनकी कीर्तन मंडली की तरह घूमता रहता है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसके माध्यम से चुनाव के ऑडियंस से मोदी जी बात कर लेते हैं। और जिस तरह के वर्डिक्ट आ रहे हैं उसमें अब तो पता ही नहीं चलता कि जनता ने वोट दिया है कि मशीन ने वोट दिया है कि सिस्टम ने वोट दिया है। जहां तक बजट की बात है, बजट अब बिल्कुल कॉर्पोरेट फोकस बजट है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक मार्केट धड़ाम हुआ है उसमें ऐसा लगा कि वो फोकस भी नैरो हो गया है। अब ये वाइड कॉर्पोरेट फोकस नहीं है, ये मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और अगर वो संतुष्ट है तो और किसी से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। वरना आप देखिए, जहां पर आम आदमी ना ढंग का घर खरीद सकता है, स्कूल की फीस महंगी हो रही है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। असर का डेटा कह रहा है कि भारत में पुनः प्री कोविड लेवल के स्तर पर बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है। आप स्वास्थ्य का देखिए तो लगातार स्वास्थ्य पर परिवारों की डिपेंडेंसी प्राइवेट स्वास्थ्य पे बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर पे बढ़ रही है, दवाइयां महंगी हैं, हर तरह का स्वास्थ्य महंगा है। तो किसी भी दृष्टि से जो मध्यम वर्ग है वो सड़क पे है, और जो सड़क पर था गरीब वर्ग वो तो गड्ढे में गिर गया है। तो ऐसी दृष्टि में अगर सरकार के ऊपर चुनाव का प्रेशर नहीं है, लोगों के लोग क्या सोचते हैं इसका प्रेशर नहीं है, तो सरकार इसी तरह के बजट प्रस्तुत करती है जो ऑटो बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि जो एक सोच नैरेटिव है उसको इस तरह से अपने कब्जे में किया जा चुका है कि घनश्याम तिवारी क्या कह रहे हैं, आरफा खानम क्या कह रही हैं, एम.के. वेणु क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल आज की तारीख में इस सरकार को, क्योंकि आप ये कह रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी है, और मैं एक मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के तौर पर भी मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ, जब आप ऑडियंस का जिक्र कर रहे हैं कि राजनीति का ऑडियंस क्या है और बजट का ऑडियंस क्या है, चुनाव में किस तरह बात करनी है, और बजट में ये भी मैं कहूंगी कि बड़ी ही साफ गोई से आप जरूर बात करें, लेकिन तारीफ तो करनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल अलग तरीके से आप ये देखिए कि कैसे छान दिया गया है बिल्कुल हमारे समाज और हमारी राजनीति और हमारी अर्थव्यवस्था को। मैं चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी बड़े खराब काम करती है बहुत सारी चीजों में, वो बहुत देर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें अच्छे कर रहे हैं आजकल। उसमें एक चीज ये है कि बड़े अच्छे एक्सप्लेनर्स, वीडियो एक्सप्लेनर्स, चाहे वो एप्स्टीन का मामला हो या अब ये बजट की बात हो। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर पर 4-5 मिनट की एक ये वीडियो एक बनाया दे दिया, ये उम्मीद में कि शायद टीवी वाले चलाएंगे, क्योंकि वैसे तो किसी ऑपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि ऑडियंस तो तैयार है, ऑपोजिशन की क्या जरूरत है, क्या कह रही है कांग्रेस, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है। और इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से इस पूरे बजट की बाल की भी खाल निकाल के कैसे पेश की है। कुछ 2 मिनट में सुनिए जरा। निर्मला सीतारमण जी को बजट स्पीच देते देख बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि कहीं अंदर एक संशय था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप या उनका कोई मंत्री आकर हमारा बजट ना पेश करने लगे। भाई, जिस तरह से हमारे देश की नीतियां, हमारी विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, किस दाम पर खरीदेंगे, इस सब की घोषणा ट्रंप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यह डर बड़ा वाजिब था। खैर, निर्मला जी ने 1.5 घंटे की बजट स्पीच दी। अपनी पूरे बजट में उन्होंने एक बार भी एफडीआई का जिक्र नहीं किया, जो नेगेटिव हो चुका है। उन्होंने हिंदुस्तान से विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर निकाल रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं किया। रुपए का तो नाम तक नहीं लिया, वो लगातार गिरता जा रहा है। इस बजट में रोजगार कैसे बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनेगी, किसानों के लिए क्या किया जा सकता है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। असल में तो ये जो बजट है और इसके सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो कटौती करके हासिल किए गए। ये असल में कटौती का बजट है, और बजट के आंकड़े खुद आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रमाण है। बात पहले करेंगे चालू वित्तीय वर्ष, अभी प्रेजेंट फिस्कल ईयर 2025-2026 की, और यहां पर मैं कंपैरिजन कर रही हूं जो बजटेड एस्टिमेट था और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, और कितना कम रिवाइज्ड एस्टिमेट है बजटेड एस्टिमेट से। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू की, राजस्व की प्राप्ति से। 78,000 करोड़ रुपए से कम का राजस्व वसूल हुआ है, मतलब आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा सूचक। नेट टैक्स की जो प्राप्ति है वो 1,62,000 करोड़ रुपए से कम की वसूल हुई है।
कुल खर्चे में सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कटौती करी है। यहां तक कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 1,44,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। हेल्थ, स्वास्थ्य में करीब करीब 3,686 करोड़ की कटौती की गई है। शिक्षा का बजट 6,700 करोड़ से ऊपर का काटा गया है। कृषि क्षेत्र की में जो बजट की कटौती है वो 7,000 करोड़ के आसपास की गई है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में बजट की कटौती 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है। शहरी विकास में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए काटे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,200 रुपए की कटौती हुई है। तो लगातार बजट कटता जा रहा है। जल जीवन मिशन और पेयजल में 50,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई। आपको याद होगा दूषित पानी पीकर लोग मर रहे हैं। लेकिन सबसे क्रूअल कटौती जो है वो SC, ST और OBC योजनाओं के बजट में की गई है। PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 890 करोड़ का बजट काटा गया। OBC छात्रवृत्ति में 690 करोड़ की कटौती की गई। दलितों के लिए पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है उसमें 360 करोड़ रुपए काटे गए। ट्राइबल्स के लिए जो विकास का कार्यक्रम होता है उसमें करीब करीब 1,600 करोड़ रुपए की कटौती की गई। और अब बात करते हैं अगले वित्तीय वर्ष की 2026-27 की, और इसमें मैं कंपैरिजन करूंगी जो बजटेड एस्टिमेट अगले वर्ष का है वर्सेस जो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो एक्चुअल खर्चा हुआ इस साल। तो किन किन स्कीम्स में पैसा काटा गया? खाद्य सुरक्षा में कम आवंटित किया गया है, यूरिया सब्सिडी में कम आवंटित किया गया है, गरीबों के लिए जो LPG योजना होती है उसमें कम आवंटित किया है, फसल बीमा योजना में कम पैसा डाला है, विमान और एरो इंजन में कम पैसा है, नौसेना डॉकयार्ड परियोजना में कम पैसा है, वायुसेना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कम पैसा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो टेक्नोलॉजी लगती है उसमें कम पैसा है। इनफैक्ट नेक्स्ट फिस्कल ईयर का जो नॉमिनल GDP रेट है वो 10% अनुमानित किया गया, जो इस वित्तीय वर्ष से एक्चुअली कम है। तो यह स्पष्ट है कि बजट के आंकड़े सरकारी खर्चे में भारी कटौती करके हासिल किए गए। सरकार ने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि में, सामाजिक कल्याण में, दलित, आदिवासी पिछड़ों की छात्रवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के फंड काटे हैं। आप ये सोचिए कि इस देश के लोग दूषित पानी पी के मर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। जल जीवन मिशन और पेयजल में बजट का मात्र 2% जो आवंटित फंड था वो इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, तो फिलहाल आप सुप्रिया श्रीनेत को सुन रहे थे। मुझे कुछ बातें जो समझ में आई, वेनु आपसे अगर शुरुआत करूं, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट वो दे रही हैं। वो कह रही हैं आर्थिक मंदी की तरफ इशारा कर रहा है ये बजट, खासकर जब वो रेवेन्यू का जिक्र करती हैं कि राजस्व कितना मिल रहा है सरकार को, और 78,000 करोड़ का राजस्व है जो कहती हैं। और मैं उनकी बात पे विश्वास करने के लिए तैयार हूं। वो एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने काम किया है, और जाहिर है कि मुझे लगता है एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आप इस हद तक जाना चाहेंगे जिस हद तक वो जा रही हैं कि आर्थिक मंदी का संकेत है? देखिए अरफा, मैं आर्थिक मंदी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आर्थिक मंदी का एक इकोनॉमिक्स में एक डेफिनेशन होता है कि नेगेटिव GDP ग्रोथ, रिसेशन जो होता है वो नेगेटिव GDP ग्रोथ। मगर यहाँ पे आप ये जरूर है, मतलब वो जो आंकड़े दे रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इकोनॉमी जैसे बड़ा इकोनॉमी में GDP बढ़ोतरी होनी चाहिए उतना नहीं हो रहा, और GDP के जो आंकड़े आ रहे हैं अरफा, उसमें भी कोई विश्वास नहीं कर रहा। उसमें भी IMF ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया, और हमारे वायर में कई अर्थशास्त्रियों ने, अरुण कुमार हैं जो अपने सुब्रमण्यम, जो इनके जो पुराने सलाहकार हैं अरविंद सुब्रमण्यम, वो सब बोल रहे हैं कि जो GDP सरकार दिखाती है उससे कम से कम 3.5-3.5-3.5% कम हो रहा है, और ये जो आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं इस पे भी ये सही नहीं है। तो अगर मान के चले तो GDP ग्रोथ मेरे हिसाब से, और जैसे अरुण कुमार ने हमारे वायर में कई बार लिखा और कहा भी है, कोई 4.5-5% से ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर 4.5-5% अगर ग्रोथ चल रहा है अरफा, तो जाहिर है आपका जो रेवेन्यू है वो भी कम होगा। रेवेन्यू कलेक्शन, इकोनॉमी जिस तरह ग्रो करेगी उसी तरह रेवेन्यू कलेक्शन होगा, वो भी कम हो रहा है। और जो बजट किया है, जैसे सुप्रिया ने बोला, उससे कहीं कम कलेक्शन हुआ है जो पिछले साल का जो बजटेड अमाउंट था। इस वजह से सरकार क्या कर रही है कि जो एक्सपेंडिचर जो है, जो बड़े बड़े इनके स्कीमें हैं जिनको ये सारा टाइम ढिंडोरा पीटते हैं, उसमें भी बड़ी बड़ी कटौतियां हो रही है। जैसे जल जीवन मिशन में कटौती है, बड़ी जबरदस्त कटौती है। एडुकेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, हेल्थ में बढ़ोतरी नहीं है, SC ST स्कीम में कटौती है। तो इससे पूरे बजट का एक मजाक बन जाता है। आप अगर पूरे हर एक इंपॉर्टेंट जो वेलफेयर जो हेड्स हैं उसमें अगर आप इतनी बजट करते हैं 100 और खर्च आप 50 से भी कम कर रहे हैं,
तो इससे फिर जो आर्थिक जो मंदी की तरफ, मैं ये कहूंगा अभी मंदी नहीं है मगर मंदी की तरफ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये मेरा बढ़ने की आशंका हो रही है। मुझे बड़ा निराशा हो रही है आपकी ये बात सुन के। जाहिर है हम नरेंद्र मोदी का, उनकी राजनीति नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन एक देश के तौर पर तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है जो लाखों करोड़ों युवा हमारे जो तैयार हो रहे हैं एक नए भविष्य और के लिए, दूसरा उनके अरफा, लिए मैं तो एक और बात जी। कहूंगा, ये बहुत अहम बात है जिसका जवाब आज तक इस सरकार से हमें नहीं मिला है। सरकार के ही ये आंकड़े बताते हैं कि कोविड के बाद जो 5 साल जो रहे हैं और उसमें जो बॉटम 70-75% लोग हैं, इन्हीं का सर्वे बताता है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है जो 2017 से 22 तक का भी था और उसके बाद भी बताता था कि कि उनकी आमदनी बढ़ी नहीं है। जो 75% जो नीचे तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, उनकी सेविंग्स गिर गई हैं और वो खरीदारी भी उनकी बहुत कम है। इसका कोई जवाब खरीदारी यानी नहीं आ रहा डिमांड। है। और मुझे याद आ रहा है कि पिछले कुछ डिस्कशंस में जब आपने एक बात कही थी और बड़ी हैरानी हुई थी कि भारत में इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इस वक्त, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है। कभी हमारे यहाँ ये समस्या नहीं रही कि डिमांड ना हो, मांग ना हो, लेकिन पहली बार इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। तमाम इंडिकेटर्स। मुझे घनश्याम तिवारी जी बताइए कि अभी वेणु कह रहे थे कि तो सरकार लगता है 2014 का बजट है उसी में फंसी हुई है। मुझे लगता है मैं भी उसी मेंटल स्पेस में फंसी हुई हूँ जब ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी बड़े विभाजनकारी नेता हैं, सांप्रदायिक नेता हैं, उस सब के बावजूद एक मामले में बड़े बेहतरीन हैं वो, कि देश को वो आर्थिक तरक्की देंगे। गुजरात मॉडल जो है वो भारत में आना था। अब इस गुजरात मॉडल को अगर आप देखें, मैंने इनकी पूरी स्पीच में कहीं भी ना तो नरेंद्र मोदी जी ने, ना ही वित्त मंत्री जी ने, ना तो जिक्र किया किसी मेक इन इंडिया का, स्किल इंडिया का, जीएसटी उत्सव का, इसके अलावा स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ। 100 बनने थे, यहाँ तो एक नहीं नजर आ रहा है। तो ये तमाम जो मैं कहूंगी नारेबाजी की जो भाषा थी, स्लोगन जो लगाए जा रहे थे, उन सब का क्या हुआ? क्या हम इसमें कोई जवाबदेही मांगे तो किस तरह मांगे? क्या हुआ इस सब का? देखिए, मैं उसी धुन पे जरा सा आगे बढ़ता हूँ। ये एक अनडेमोक्रेटिक विजन का पहला बजट है। 2014 से 2025 तक आप एक डेमोक्रेटिक विजन का बजट देखती थी, जहां पर लगातार ये कहा जाता था कि चलिए मोदी जी देश के लोगों का मन जीतना चाहते हैं, उसके लिए तरह तरह के नारे दिए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और तरह तरह की चीजें। अब उन नारों से लोगों का तो पेट भर गया, लेकिन वो नारे कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन अब उन नारों की सरकार को जरूरत नहीं है। वो नारों का दौर 2024 में समाप्त हो गया। 2024 के चुनाव के बाद इस तरह के इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन से स्पष्ट है, चाहे वो महाराष्ट्र का है इलेक्शन है, हरियाणा का इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन है, और जो इलेक्शंस होंगे, बिहार का इलेक्शन है, उसमें नारों और नैरेटिव का महत्व खत्म हो गया। कुछ इस तरह की का कब्जा है सरकार का या बीजेपी का या उसके तंत्र का, कि उनको अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो अपने बजट के कम्युनिकेशन में इन नारों की जरूरत नहीं है। अब ये वो बजट है जो किसी एक कंपनी का बजट आता है। जैसे कि कंपनी के बजट में कोई उस कंपनी के शेयर होल्डर नारे नहीं लगा रहे होते, वो चुपचाप सुनते हैं कि ये कंपनी है, इस तरीके से कंपनी अपना पैसा खर्च करेगी। वरना एक सरकार 53 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है एक गरीब देश में, जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिस देश में सबसे ज्यादा दुनिया में महिलाएं बेरोजगार हैं, जिस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं, जिस देश में देखिए अगर आप रीजनल डिस्पैरिटी जो एक पैमाना था बजट को मेजर करने का, उस दृष्टि से भी देखिए तो जो बिहार जैसे राज्य हैं, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी है। जब इन्होंने मनरेगा को वीबी रामजी जैसे स्कीम में बदल दिया, जहां स्टेट को भी अब 40% देना होगा, तो एक स्कीम के तौर पर इन्होंने क्या संदेश दिया कि जो गरीब राज्य हैं और गड्ढे में चले जाएं, क्योंकि उनके पास तो 40% होगा नहीं देने के लिए इन मजदूरों को और ग्रामीण श्रमिकों को। इसी तरह, और सरकार भी पैसा देगी नहीं, केंद्र सरकार पैसा देगी नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब सरकार का ध्यान जो है बजट के रूप में शुद्ध तौर पर मुट्ठी भर लोगों पर है, जो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जो कुछ जगहों को बहुत शानदार बनाएंगे, जहां बुलेट ट्रेन चलेंगी, जहां पर 3-3 एयरपोर्ट होंगे, जहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज लगेंगी, चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो, मैं सेमीकंडक्टर स्पेस से आता हूँ, सेमीकंडक्टर हो, जो बहुत सारे रोजगार पैदा नहीं करती, लेकिन वो दुनिया के पटल पर
जहां पर वोटर्स नहीं हैं वहां पर मोदी जी ऊंची ऊंची भाषण दे सकते हैं उसके आधार पर। जो वोटर्स हैं उनको समझाने के लिए दूसरी चीजें हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले बजट में आप कोई नारे, कोई नए स्लोगन, कोई नया मिशन नहीं देखें। उस सारे को समेट करके एक बक्से में डाल दिया गया है, जिस बक्से पर 2047 लिखा हुआ है। अब हर चीज जो की जाती है, कहा जाता है 2047 के लिए की गई है। शिक्षा का बजट नहीं बढ़ाया क्योंकि हम 2047 का विकसित भारत बना रहे हैं। स्वास्थ्य का बजट नहीं बढ़ाया जैसी जरूरत है क्योंकि हम 2047 का विकसित भारत बना रहे हैं। तो ये जो मेरे ख्याल से आपके नजरिए में या वेणु जी के नजरिए में या मेरे नजरिए में ये एक फर्क है। मैं क्लियरली इसे एक अनडेमोक्रेटिक इंडिया का पहला बजट देखता हूं, जिसमें शेयर होल्डर कुछ कंपनियां हैं, देश के नागरिक नहीं है और न देश के राज्य हैं। बड़े बड़े खतरनाक संकेत है यहाँ जो पे आप कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं कह रही हूँ वेणु, अमेरिका के लिए कहा जाता है यूजुअली कि देश नहीं है, ये कॉर्पोरेशन है, ऐसा लगता है। इसी तरह की कोई भाषा आप जिस बारे में बात कर रहे हैं घनश्याम जी। वेणु मुझे बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि ये तो सिर्फ विपक्षी नेता है इसलिए मोदी जी को घेर रहे हैं ये? देखिए, मैं घनश्याम जो कह रहा है उसमें एक सच्चाई तो है कि ये सरकार ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि हम कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देंगे, नेशनल चैंपियंस बनाएंगे। उसके तहत अपने जो भी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जो हमारे जो 8-10 जो बड़े उद्योग हैं, उनको इन्होंने खूब प्रोत्साहित किया, उनको बड़े बहुत सारे कंसेशंस दिए। मगर मेरा ये कहना है, जहां मैं घनश्याम से डिसएग्री इस बात पे करता हूं कि उसके बावजूद यहां पे कोई ग्रोथ नहीं प्रोड्यूस हो पाया। मतलब लोगों के पास आमदनी नहीं हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, लोगों को इनकम नहीं मिली। और आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो ये दर्शाता है कि अगर उसमें एक चैप्टर है अरफा, जिसमें ये बड़े बिजनेसेस को भी ये कह रहे हैं कि आप भी अपने आपको जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो करना चाहिए था उस पर खरे नहीं उतरे हैं। आप जिस तरह जापान में सोनी और बड़े बड़े कोरिया में सैमसंग, बड़ी कंपनियां, जर्मनी में फोक्सवैगन, जिस तरह ये जापान, जर्मनी और कोरिया की कंपनियां जो नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाती हैं और एम्प्लॉयमेंट देती हैं, वो आप लोग उस पे आप खरे नहीं उतरे। तो ये उनको भी ब्लेम कर रही है अभी। हालांकि इनके लिए इन्होंने बहुत किया बिजनेसेस के लिए, मगर अब ये कहना शुरू कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, निवेश नहीं कर रहा। तो बिजनेसेस ने भी तो बहुत किया इनके लिए। एप्स्टीन फाइल में आया है कि जाके वहां सिफारिश कर रही थी। अनिल अंबानी का जो जिक्र हुआ है उस बारे में थोड़ा सी बात कीजिए कि सिर्फ मोदी जी ही नहीं करते बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन भी हमारे अडानी अंबानी जी भी कर रहे हैं उनके लिए, मोदी जी के लिए। वो बात तो सही है। बिजनेसमैन, ये जो बड़े उद्योग है, ये बीजेपी को चढ़ के इनके पार्टी की फंडिंग जरूर करते हैं, मगर उन्होंने लोगों के लिए अभी तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए। तो इसकी भी आलोचना हो रही है कि आपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए अभी तक। एक बारी तो निर्मला सीतारमण, मुझे याद है अरफा, 2 साल पहले सीआईआई के जो बड़े उद्योगपतियों के मीटिंग में बोला कि आप लोग हनुमान की तरह हो। हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास नहीं, इसलिए आप लोगों को भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं है और आप निवेश नहीं कर रहे हैं और रोजगार नहीं पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह का भी इनका चल रहा है। मतलब सरकार इनसे फ्रस्ट्रेटेड है कि बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अच्छा, बिजनेस से बात करो तो वो कहते हैं हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ मांग ही नहीं बढ़ रही, तो हम और माल अगर प्रोड्यूस करेंगे तो खरीदेगा कौन। तो ये एक किस्म से ये ट्रैप फंसा हुआ है। बाकी मैं घनश्याम की बातों से सहमत हूँ कि मोदी जी का एक नजरिया है बिग बिजनेस से डील लेकिन करने जो का। एक बात घनश्याम जी ने कही है जो बड़ी ही चिंताजनक बात है, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक क्या होता था कि एक रटी रटाई भाषा में हम ये कहते थे कि देखिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को मीठा बनाकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है इस बजट के जरिए, या सबको खुश करने की कोशिश कर रही है कि मिडिल क्लास को ये दे दिया, लोअर मिडिल क्लास को ये दे दिया, किसानों को ये दे दिया। घनश्याम जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, अभी किसी को खुश करने का भी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन ये सरकार महसूस नहीं करती। राजनीतिक तौर पे इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है इस बात का कि बजट एक तरफ, वो अलग एक आइसोलेशन में रह सकता है, अलग अलग एक कमरे में बंद, और बाकी जो है आपके लिए मैदान खुला है। नहीं, मैं भी कभी कभी सोचता हूं जो घनश्याम कह रहे हैं
कि अब इन्होंने इलेक्शन जीतने का ऐसा टेक्नोलॉजी पैदा कर लिया है, अब पता नहीं उसमें एआई का भी इस्तेमाल होगा कि नहीं आगे जाके, कि और जगह परफॉर्मेंस करने की इनको अब जरूरत महसूस ही नहीं होती 2024 के बाद। ये खासकर इस लिमिटेड दायरे में मैं घनश्याम जी से सहमत हूँ। जो इलेक्शन विनिंग मशीन इन्होंने बना रखी है, और जो भी जिस तरह भी करते हैं एसआईआर, ये वो, इलेक्शन कमीशन भी इनका एक अलायंस पार्टनर बना हुआ है, उसके चलते हुए ये बात सही है, इनको कोई डर ही नहीं है कि लोग नाराज हो जाएंगे, लोगों की आमदनी नहीं है, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, और उनके खिलाफ वोट करेंगे, ऐसा कोई भय भी नहीं है इनको। वो बात तो सही है। बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी उस सवाल, मामले में मैं घनश्याम से सहमत हूँ। जी हाँ, आखिरी सवाल बिल्कुल बहुत संक्षेप में। घनश्याम जी ये बताइए, अब ऑपोजिशन इसको किस तरह से देख रहा है? अगर कम्युनिकेशन के सारे माध्यमों पे कब्जा एक पॉलिटिकल पार्टी का है, और हम ये देख रहे हैं कि आपके पास, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि चलिए एक्सप्लेनर बना के, लेकिन कोई सुनने वाला हो तो बात हो, कोई बात कहने वाला हो तो बात की जाए। अगर अलग अलग खानों में ये बंद हो गई हैं चीजें, तो हमारे आपके कहते रहने से फर्क क्या पड़ता है? देखिए, तीन बातें हैं। पहले जो आपकी बात है, हमारे आपके कहते रहने से फर्क क्या पड़ता है। मैं मानता हूं कि भारत इतनी पुरानी सभ्यता है कि एक हमारे अंदर सही और गलत का पैमाना, हम किसी भी पंथ से आते हो, धर्म से आते हो, हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर का स्वधर्म है। और हम जो कह रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि हम ये कहना हमारा स्वधर्म है। आप जर्नलिस्ट हैं, वेनु जर्नलिस्ट है, मैं विपक्ष में हूं। देश की लोकतंत्र में जो हमें सही दिखाई देता है वो कहना हमारा स्वधर्म है, तो हम इसलिए कह रहे हैं। अब दूसरी बात ही कि इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर आप देखिए इस दृष्टि से कि जिस तरीके से सरकार ने तकनीक के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, पैसे के माध्यम से सारे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है, कि ऐसे चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, जो शायद इनके लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी, वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसे ऐसे समय में वाकई ये बजट और बजट की आलोचना से सरकार को नहीं लगता कि उसके वोट पे कोई फर्क पड़ने वाला है। और रही बात कि अगर हम आलोचना करते भी हैं, तो जिस तरह का आगे कम्युनिकेशन का तंत्र हमें दिखाई दे रहा है, उस तंत्र में ये स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में ऐसा जो जिन माध्यमों से कम्युनिकेशन होगा वो टेक्नोलॉजी लेड होंगे, और ऐसे सिस्टम्स लेड होंगे जहां पर हमारे इस कहने का सीधा प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा। ये तीनों चीजें अपनी जगह पर स्पष्ट मुझे दिखाई देती हैं। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका घनश्याम जी और एम के वेणु। मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातचीत का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बजट में जिस तरह की चिंताजनक बातें आप दोनों सामने रख रहे हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसी आम जनता तक जिसके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है, उसी को जगाना बहुत बहुत जरूरी है। अभी लौटते हुए हम इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो सुन लेते हैं जरूर कि अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है इस पूरे बजट के मुद्दे पर। नमस्कार। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है। उत्तर प्रदेश ये किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज की।
अब सोचिए अयोध्या जैसी जगह पर तो इसीलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है, डिफॉर्म्स कर रही लोग, कोई उम्मीद नहीं इनसे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है कि ना गरीब किसान गांव में रहने वालों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो बुनियादी ढांचा है उसको भी खत्म कर देंगे।